ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक टू थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज हम फिर से आपके फेवरेट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के साथ मौजूद हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ही है ना? Clinical psychologist. क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज के एपिसोड में व्हाट आई वांट टू डिस्कस इज पर्टिकुलरली बिकॉज़ दिस इज समथिंग दैट्स मैं आजकल बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ, बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ इस चीज़ के बारे में। अली, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, राइट, जो जिनको इन्फ्लुएंसर्स कहा जाता है ऑफन टाइम्स, इन्फ्लुएंसर्स बिकॉज दे टेंड टू इन्फ्लुएंस पीपल हु आर फॉलोइंग दैम, एंड उनके इन्फ्लुएंस के ऊपर जाकर वो लोग अपनी ज़िंदगियाँ बदलते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं पूछना चाहूँगा, हैव यू सीन द सोशल डिलेमा? I saw half of it. I'm going to see the other after How night. do you like it so far? It's amazing. Yeah. It's so insightful, and what I really like about it is कि a lot of the documentaries I watch are from a behavioral perspective. तो ये actually एक बंदा जो कि Silicon Valley में बैठ के उसको the conscience of Silicon Valley कहा जा रहा है. हाँ. It was very interesting. Yeah, वो बड़ी eye opening and a lot of things that we felt or had discussions about, but always thought नहीं conspiracy theory, नहीं ऐसा नहीं, वो आपको finally एक उसमें मिल गया। बट उसी को देखने के बाद भी, पहले भी मैं सोच रहा था, और उसको देखने के बाद खासकर मैंने देखा कि एक इंटरनेट सब कल्चर भी बन चुका हुआ है इन्फ्लुएंजा वाला। ट्विटर के ऊपर मेरे पर भी अटैक आया था, एंड आई ट्राई टू डीकंस्ट्रक्ट कि व्हाई आर पीपल सो अगेंस्ट इन्फ्लुएंसर्स, एंड उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करते हुए मुझे रियलाइजेशन हुई कि मे बी अ लॉट ऑफ व्हाट वी डू इज रबिंग ऑफ वेरी पुअरली ऑन द व्यूअर्स। कि फॉर एग्जांपल, मेरे बाल बने होते हैं, हमेशा बने होते हैं। मैं जब बाल नहीं बनाता तो मुझे लाइक कम आते हैं, ठीक है, मुझे रिस्पॉन्सेस, इंगेजमेंट कम आती है, तो ऑटोमेटिकली मेरी एक बड़ा सबकॉन्शियस किस्म का बिहेवियर बन गया कि मैं जो ना बाल बनाने, सुबह उठने बाल बनाने, जब मैं वो स्टोरीज़ और सारा वो डालता हूँ ऑनलाइन, और हम लोग उसको कॉन्स्टेंटली देखते हैं, तो कंज्यूमर तो प्रॉब्ली ये सोच रहा होगा कि यार बाल बनाना जो है ना वो बड़ा एक नॉर्मल सी चीज़ है। और वो जब सुबह उठते हैं उसके बाल ख़राब होते हैं, तो वो बैठ के प्रॉब्ली ही फील्स बैड अबाउट इट। और जब मुझे देखता है वो दानियाल शेख को देखता है, वो मुबीन को देखता है, वो इस तरह के 10-15 लोगों को देखता है, और एवरीबडी इज़ परफेक्टली वेरी परफेक्ट ऑनलाइन। Yeah. तो डू यू थिंक दैट इम्पैक्ट्स हिम? Yeah, so when I was reading the research on this, so I found something really interesting कि there's one factor जो कि contribute करता है in how healthy or unhealthy social media is going to be for you. Okay. और वो ये है, what is your level of envy? Okay. So आप जब social media पे होते हैं, there are some, I mean, you are someone who has a large following, but how there are some people who use social media और वो खामोश रहते हैं, देख रहे होते हैं, लेकिन कुछ बोलते नहीं है, कुछ पोस्ट नहीं करते, they don't talk at all. That's what you call passive social media usage. Okay. And that is उसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी एम्पैथी भी राइज, एम्पैथी कह रहा हूँ, आपकी एनवी के लेवल्स इंक्रीज होते हैं। Right. If there's levels of envy, then there's probably going to be some negative impact on your mental health, on your views, how you're perceiving other people's self-esteem पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। Right. But हाँ, the data pretty much clearly says कि increased social media usage is not good for your mental health. Right. Without a doubt. So I mean, अच्छा, so आपने बड़ा इंटरेस्टिंग उसको कन्वर्ट किया. You took it from the creator side to more on the user side. Yeah. Because you're saying कि the primary correlation of a lot of the mental health issues with social media is कि user जो है वो अपना social media किस तरह manage कर रहा है. Can you expand a little bit more on that? कि what does that mean? Like if I'm a social media user, I'm a creator, yes, but I'm also a user. Yeah. So क्या कोई digital hygiene है, क्या है जो कि? Oh yeah. So I think with you in particular, your situation is very different because you can't really separate your usage from your production. Yeah. Right? Yeah. At this point, I have my own little public platform. Even I can't separate that anymore. Someone who does not have a public platform, जो कि purely consume कर रहा है, someone who's a purely consumer, someone who's not benefiting in any way from selling a product, selling a service. What I just said, that's related to them. But I'm very interested in what happens to people like you who are public figures. You have over 100,000 people on your Instagram now, right? Yep. So, सबसे पहले तो I think you may have talked about this with someone before, but cancel culture. Right. You're not allowed to be human. Yeah. Basically. I mean, you're going to make mistakes. And it's important to identify कि human होता क्या है ना, और मेरे लिए human वो होता है जो कि mistakes करता है. Yeah, absolutely. That's being human. Right? Yeah, absolutely. And मैं ना
what I was just telling you earlier, okay, I have this client and I made a mistake with this one client. And as a therapist, it's very strange for people to imagine that you would make mistakes with your clients. It's probably very strange for people to imagine that I'm even admitting this. But the fact is, it's not only me who makes mistakes, it's clients who, it's therapists who also have 50 years of experience. Yeah. And I'll bring this back to what you said. I just want to say With this some here. context, yeah. Yeah. So I made a mistake with her. I said something that may have been insensitive. And she, after a few weeks, she tells me, and I just apologized for it. She was surprised that I apologized for it, and she was expecting me to justify it in some way. But I said, no, I'm going to make mistakes, and this probably also is not the last mistake that I'm going to make, because this might be a professional relationship, but it's a human relationship. Yeah. And no matter what human relationship there is, there's going to be mistakes. And once you are able to overcome that mistake, फिर आप आगे बढ़ सकते हो और आपकी relationship और भी healthy हो सकती है. Now, she said something very interesting at the end of that conversation. She said कि, people on public platforms, वो therapist की बात कर रही थी, लेकिन मेरे ख्याल से this applies to anyone who's sort of a public figure. She said that they seem like gods, and it's not that they're trying to be, it's that's what they seem like demigods or something like that. And when a god makes a mistake, their followers become atheists. Right. And I was blown away when she said that. Yeah. Right. And I think that applies as much to, therapists as it does to any other profession. Yeah. Especially yours, especially someone who has such a large following. And people are looking up to you and they're thinking, ये जो कर रहा है, सही कर रहा है, ये हमने करना है life में और सारा का सारा. Exactly. So definitely, I think it has a huge impact in that manner. I think, or your peer perception management, for example, you feel like you have to make your hair every morning because it gets you higher engagement, right? Yeah. You're managing people's perception of you. Now, on one hand, that's very, very important because that's how you're going to grow. And that's the economy. Like, that's the social economy, right? And exactly. And that's probably the biggest for creators. And most of the creators I know, वो बड़ी confused situation में, because एक point के ऊपर उनको ये हो रहा है कि they want to be themselves. To be very honest, who wants to go out of their way, make extra efforts just to make people perceive them better? But the fact is that the social economy dictates that you can't truly be yourself, right? You have to be the best version of what people want you to be. And I see, and to be very honest, हम अगर mental health की बात करें, we regularly meet up content creators वगैरह. मैं आपको बता रहा हूँ इस वक्त it's an incredibly huge pandemic in content creators. Even before the cancel culture, जितने भी creators थे वो एक बहुत अजीब सी situation में थे. There weren't enough people who they could talk to, not enough people who could relate to it. सामने आकर आपका मतलब आप total audience के उस पे हैं, सहारे पे हैं कि ऑडियंस आपको किस तरह ले रही है, वही आपकी सेल्फ स्टीम बढ़ा रही है, वही आपकी सेल्फ स्टीम गिरा रही है. आप बाहर जाके किसी दोस्त यार से बात करते हैं, उसको नहीं समझ आती कि पब्लिक फिगर कैसा होता है, क्या होता है. और सुबह शाम कभी कभार इस तरह होता है. फॉर एग्जांपल पिछले दिनों हमारी डिस्कशन हो रही थी कि जी आप इंसान का दिन बुरा गुजरता है ना, कोई दोस्त कॉल कर देता है, वो कह देता है यार तूने ये नहीं किया, वो नहीं किया, आप तब जाते हो. बट शाम को 4 बजे आपका, लेट से 3 बजे आपका ये मसला हुआ और 4 बजे जो है आपने कमिट किया हुआ है एक ब्रांड को कि जी मैंने इस इवेंट पे जाना है या मैंने ये आपकी स्टोरी डालनी है. एंड सडनली यू हैव टू टेक इट ऑल ऑफ. नाउ यू हैव टू कम्प्लीटली चेंज योर वाइब and go online and be like, hey guys, ये इस तरह. And a lot of people will come out and say you're disingenuous. Yeah. And they're right. But you're reading that as well and you're just like, yaar, I mean, what do I do? Right? I mean, I think it's great for you to admit that. Even, I mean, it's saying something, even you feel disingenuous when you might do that at times. Yeah. But you have to. You have to. So I think that pandemic thing you just mentioned, it's a pandemic of loneliness. 100%, yeah. Because it's वैसे ही मुश्किल है इतना लोगों के साथ कनेक्ट करना और फिर ऊपर से आपको एक हायर स्टैंडर्ड पे रखा जाता है. आई मीन अच्छा उसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँ ना, मज़ेदार बात ये, कोई आम आदमी लोनली होता है ना तो उसको पता होता है ये लोनली है, ये बेचारा लाइफ में सैड है, डिप्रेस्ड है. इंटरेस्टिंग. अच्छा आप तो लोनली हो ही नहीं. यू हैव एवरीथिंग, यू आर प्रिविलेज्ड. आपको तो इतनी फॉलोइंग है, उस फॉलोइंग का मैंने क्या करना है? इफ एज अ ह्यूमन बीइंग आई एम नॉट. And how do you create connection, man? Up connection you create hota hai कि you and I are getting to know each other 3-4 months later. We have a problem. We discuss that problem. If we're able to get through it in a healthy manner,
the relationship is stronger, the friendship is stronger. Right. Relationship किसी किस्म की भी हो, जब तक उसमें गलती नहीं होगी, उसमें growth नहीं होगी. Now what do you do when you have no relationship with 100,000 people who are watching you? Yeah. And then you say something that they don't like. Yeah. Right? There's this really, really great book. It's called So You've Been Publicly Shamed by John Ronson. उसके अंदर ना उसने, John Ronson is a very, very good writer. उसके अंदर उसने कुछ stories उठाई हैं of public figures जिनको publicly shame किया गया. Some of them weren't even public figures actually. एक औरत थी who made a really bad joke about AIDS in Africa. She ends up losing her job. Acha. She doesn't get hired for anything else because they Google her name and what's the first thing that comes up? Articles that cancelled her. Right. And फिर public figures का भी था, and it basically talks about how this new age that we're living in, हमें समझ भी नहीं आ रही. First of all, how do you redeem yourself? For example, if I made a bad joke when I was 15, ठीक है, that was insensitive at the time, और वो मैंने Twitter पे post किया था 10 साल पहले. अब it resurfaces. It probably has very little to do with who I am as a person 10, 11 years on. Yeah. Now what? Now what do I do? You know? And so how do you redeem yourself? और क्या कोई लिमिट है कि अच्छा नहीं 5 साल के अंदर उसने पोस्ट किया तो फिर मैं इसको ब्लेम करूंगा वरना मैं नहीं करूंगा. हाँ, वरना पुराना हो गया. Exactly. And अब बात ये है कि even with therapists, मतलब you know, my seniors, my teachers who are from a previous generation of therapists, I think they're not very well, they don't really understand social media like, you know, we do because we grew up in it. Right. I saw this really interesting picture. You must have seen it too. It was just this picture on Instagram. I think I was scrolling and I saw it. It said that there was a time where we used to go online to escape the real world, and now we feel like we have to go offline to escape the online world, right? Yeah. When I say digital detox, who thought 15 years ago these terms would even exist? Okay, digital detox? Yeah. You use it, what? I mean, what do you do on a phone? मुझे याद है मेरा जब पहला फ़ोन आया था, it was a Motorola L6. It wasn't a smartphone. There wasn't much I could do on it, you know? Yeah. But then smartphone, social media, this stuff has changed the game entirely. And it's not just like, अब वो फ़ोन तो रहा ही नहीं है ना. अब तो वो आपकी एक प्रोडक्टिविटी डिवाइस बन गई है जिसमें आप सब कुछ कर रहे हैं. अपने घर को उसी से कंट्रोल कर रहे हैं. आपकी इतनी सारी चीज़ें उसके साथ मिल गई हैं कि आपके लिए कम्प्लीटली लाइक कहना कि मैं अपने फ़ोन को एक डब्बे में डाल के रख दूँ एक पूरे दिन के लिए, वो मुश्किल होना शुरू हो जाता है. आपका वर्क उसके ऊपर है, ईमेल्स उस पर आ रही हैं वगैरह वगैरह. Pay your bills. Yeah, absolutely. I mean, just that's insane. Yeah. So one thing that I really sort of want to understand is कि for on a consumer, so हमने influencers की बात की, उसको थोड़ा साइड पे रखते हैं. On a consumer standpoint, social media ये लोगों को अब थोड़ा थोड़ा समझ आना शुरू हो गया है कि सोशल मीडिया टॉक्सिक होना शुरू हो गया है. बट वो होता है ना कि मुझे हमेशा इस चीज़ के ऊपर प्रॉब्लम होती है कि जब हम थोड़ा बहुत ही ज़्यादा लेफ्ट राइट या हम ब्लैक एंड वाइट कर देते हैं. इधर सो जब लोग कहते भी हैं कि यार मैं सोशल मीडिया से बड़ा तंग आ रहा हूँ या मैं एनवियस हो रहा हूँ या व्हाटएवर, तो कोई ना कोई दोस्त होता है आपका कहता है यार मैं तुझे कहा था ना फेसबुक डिलीट कर, इंस्टाग्राम डिलीट कर, यू नो. एंड दैट आई फील लाइक इज एन एक्सट्रीम स्टांस. Yeah. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपने एक सोसाइटी के अंदर रहना है और सोसाइटी का नॉर्म है सोशल मीडिया. बट देन this constant need to check social media and then it hitting your self-esteem and it becoming a very addictive, very, very unhealthy medium. और आपने डिजिटल डिटॉक्स की बात की, सो कैन यू इलैबोरेट अ लिटिल बिट मोर ऑन कि यार क्या एग्जैक्टली इंसान कर सकता है जिसमें वो कनेक्टेड भी रहे, वो नॉर्मल इंडिविजुअल भी रहे, बट वो थोड़ा सा हो जाए. You know, जब पैंडमिक जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो आई वाज डूइंग अ लॉट ऑफ सेशंस. मुझे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में बुलाया था, स्पीक अबाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ कोविड एंड व्हाट नॉट. तो एक चीज़ जो मैं कह रहा था और बहुत थेरेपिस्ट कह रहे थे कि जस्ट बिकॉज आप सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं है कि आपको इमोशनल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है. और इसका मतलब यही था कि यू नो यू हैव योर फोन्स, यू हैव योर लैपटॉप्स, यू कैन स्टे कनेक्टेड विदाउट मीटिंग ईच अदर. बट मैं वही सोच रहा था. बट ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स अब हमें नज़र आ रहा है कि यू नो कोविड के दौरान स्क्रीन टाइम सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है, स्लीप पैटर्न्स ख़राब हो रहे हैं. It's becoming a real problem. I'm going to get to digital detox in just a second. उस पर पहुँचता हूँ, but something you said से मेरे दिमाग में ख्याल आया. एक चीज़ जो मैं देखता हूँ क्लिनिक में मेरी कभी कभी ये कॉन्वर्जेशंस होती हैं. There's this person that I'm following and he just posts this stuff and I just don't like it. Okay, why don't you unfollow him? That's so immature. What? Yeah. So, you know, it's this sense of, I mean,
your unfollow buttons, your like buttons, your comment buttons, your share buttons are you have some level of control on what you get to see on your screen. You have some level of control on the content that you are consuming. If you have someone in your feed who has shown themselves to be a negative influence on you, initially, I understand where it comes from, but initially I was very surprised to hear, okay, I don't want to unfollow this person or that person because unfollowing them is immature. I'm sure you've heard this before as 100%. Well. So, and then, I sort of have to dive a bit deeper into their understanding of maturity, kya hoti hai, immaturity kya hoti hai, acha, isko leave karna, immature kya hoga. Okay, how about responsibility towards yourself? Agar aapko pata hai ek cheez aapko negatively impact kar rahi hai, do you not want to remove it from your life? Right. उस पर एक पूरी कॉन्वर्जेशन करनी पड़ती है. तो सबसे पहले तो ये कि डिजिटल डिटॉक्स पे तो आते हैं, बट जब आप स्क्रीन टाइम ले भी रहे हैं, आप जिस कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, आर यू केयरफुल विद हु यू एंड व्हाट यू आर कंज्यूमिंग? तो मतलब if someone you're following is just posting strange stuff, whether it's a friend or whether it's a public figure, unfollow them if you don't like it. I mean, that's purely within your control. It has nothing to do with maturity. It has nothing to do with immaturity. It has to do with taking care of your mental health. Right. क्योंकि बहुत impact होता है. फिर जब हम digital detox की तरफ जाते हैं, अब आमतौर पे how you said black and white, तो इस पे भी जब हम बात करते हैं तो people think black and white. मैं 5 दिनों के लिए अपना फ़ोन दूर रख दूंगा, 2 दिनों के लिए अपना फ़ोन दूर रख लूँगा. ये उस तरह की मिसाल है कि have you ever been on a diet? I haven't. Any sort of diet? I've been on diets. Right. And एक ज़माना था where I would go on a diet and मेरा होता था कि मैंने completely clean खाना है. Completely clean खाने का मतलब है कि मैंने एक बाइट भी नहीं लेनी उस कुकी की जो मेरी बहन ने बना के फ्रिज में रखी हुई है. Right. फिर what would happen is अगले दिन मैं एक बाइट ले लूँगा, यार मेरी तो डाइट ख़राब हो गया और सब ख़राब हो गया, पूरी कुकी खा लेता हूँ. Now it makes no sense because अगर if you think of it in terms of numbers, अगर मैंने 20 extra calories खाई हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा if I just go back on my diet. But what happens? I end up eating another 300-400 calories of that same thing, and that ends up having a bad impact on my body. So that's that black and white thing. या तो मैं all or nothing, इसको हम CBT cognitive behavioral therapy में बहुत बात करते हैं. It's what you call a cognitive distortion, कि either you go all in one direction or all in the other. तो यूं ही डिजिटल डिटॉक्स ये मतलब नहीं है कि आपको हफ्ते के लिए अपने फ़ोन को साइड पे फेंकना है, लैपटॉप को साइड पे फेंकना है. यू कैन टेक आउट आवर्स इन द डे कि मैं 8 PM से लेकर 10 PM तक, 10 PM से लेकर 12 PM तक फ़ोन नहीं यूज़ करूँगा. एंड वाला I'm on it, मैं उसमें स्लीप हाइजीन की भी चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि फ़ोन्स में ब्लू लाइट एंड वो बेसिकली रोकते हैं मेलेटोनिन के रिलीज़ को. मेलेटोनिन आपके ब्रेन के अंदर वो हार्मोन है जो कि इट हेल्प्स मेक यू टायर्ड एंड sleepy. Has something to do with your quality of sleep too. When you're on your phone right before you sleep, you're suppressing its release. You don't want to do that because that's going to impact your sleep negatively. So to everyone listening, the one tip I can give is कि 1.5 hour at least before you sleep, get rid of your screens. That can be your digital detox for the day. और वही वाली बात है कि जो साइकोलॉजी वो ऑनलाइन आपको अफेक्ट कर रहा है, वो फिजिकल वर्ल्ड में भी इन दिस वे वो अफेक्ट कर रही है चीज़. हाँ, आपकी स्लीप ख़राब होगी, तो आपका मूड ख़राब होगा, मूड ख़राब होगा तो फिर अगेन यू आर गोइंग टू गेट इनटू द साइकिल ऑफ फीलिंग वर्स एंड वर्स एंड वर्स एंड वर्स. एग्जैक्टली यार, पता है. और फिजिकल की बात की ना, तो आमतौर पे जब हम स्ट्रेस के बारे में सोचते हैं, सोशल मीडिया कहीं से भी आए, तो वी इमेजिन दैट स्ट्रेस इज जस्ट अ मेंटल थिंग एंड इट डजंट. लेट मी जस्ट शेयर अ वेरी स्मॉल एक्सपेरिमेंट विद यू क्विकली. आई रेड दिस रियली इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट. अब मुझे नंबर्स नहीं याद फॉर एनी साइंटिस्ट हू आर हियरिंग मी, आई एम सॉरी. So there was this really interesting experiment where they took this group of patients जिनकी सर्जरी की. एक ग्रुप को उन्होंने रख दिया प्री ऑप रूम में ऑपरेशन के बाद, एक ग्रुप को उन्होंने रख दिया पोस्ट ऑप रूम में. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक कि देयर वाज अ सिग्निफिकेंट समथिंग लाइक 22-23% डिफरेंस था. सेम सर्जरी हुई है लेकिन रिकवरी टाइम उन लोगों का कम था जो कि पोस्ट ऑप में थे. पोस्ट ऑप में हर किसी का ऑपरेशन हो गया, यू रिलैक्स्ड एंड व्हाट नॉट, सो यू रिकवर क्विकर. राइट. प्री ऑप में जो लोग थे, अभी एवरीवनस एंग्शियस इन दैट रूम, यू रिकवर स्लोअर. एंड देयर इज सो मच रिसर्च दैट टेल्स अस, ये हमें पता है कि स्ट्रेस का एक डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके इम्यून सिस्टम पे. द मोर स्ट्रेस्ड यू आर, the less functioning your immune system will be and the more susceptible you are to different illnesses, mental and physical as well, by the way. So it's not like, oh, it's just mental, it's physical too. I mean, stress is physical. And especially वो लोग जिन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है अपनी चीज़ों के बारे में बात करना,
उनके फिजिकल सिम्टम्स ही निकलते हैं एंग्जाइटी के, राइट हार्ट बीट फास्ट, गैस्ट्रिक इश्यूज, हाथ शेक करेंगे, स्टफ लाइक दैट. तो या ओके सो आई ब्रिंग यू बैक टू जो हम पहले बात कर रहे थे. Yeah. ठीक है थोड़ा सा इन्फ्लुएंसर साइड ऑफ थिंग्स के ऊपर. अच्छा जब एक इन्फ्लुएंसर है और वो हमारे पास 2 कॉन्वर्जेशन उठती हैं. एक कॉन्वर्जेशन ये होती है कि भाई व्हेन we're going out there and we're doing greater and better and all of those things, तो हम और इवन एक्चुअली मैं ये कहूँगा इवन इन्फ्लुएंसर्स नहीं, जब हम सोशल ओवरऑल की बात करते हैं दोस्त यार वगैरह, तो जनरली we tend to share the best like the best things that are happening in our lives, right? So तो एक कॉन्वर्जेशन तो ये कि यार जब when everybody is doing that तो आपको एक sort of सोसाइटी को एक मोटिवेशन मिलती है टू बी बेटर वर्जन्स ऑफ देमसेल्व्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो ऑटोमेटिकली पुश करते हैं. क्योंकि हमने पाकिस्तान में पर्टिकुलरली देखा, लाइक मैं जब इसको इस इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से देख रहा होता ना, तो अमेरिका के अंदर 70 से लेके आज तक जो है वो उन्होंने अमेरिकन ड्रीम का कॉन्सेप्ट बना दिया और उन्होंने सबको लगा दिया कि यू कैन बी अ मिलियनेयर एंड यू कैन बी अ मिलियनेयर एंड एनीबडी कैन बी एनीथिंग, एंड डेफिनेटली, एंड बिकॉज ऑफ दैट पीपल वर स्लेविंग अवे to ensure that they create a better world, they create a better society, and automatically standard of living of that country grew. अच्छा पाकिस्तान में वो पोस्ट भुट्टो जो है, we had a very sort of communistic mentality where anybody who was richer, anybody who was इस तरह से, तो वो हमें लगता था करप्ट है या इस तरह है. और somehow doing making money became this demonized thing in Pakistan. और वो मुझे आज भी नज़र आता है कि a lot of times when it comes to people making money, तो वो बहुत easily उनको you burn the rich and privileged and वो सारे. हालांकि अगर there should be a difference between people with hard earned money and people who've inherited money, right? But then with social media what I see is कि a lot of people are now looking to increase their standard of living because they've realized वो one way or the other जो है ना, उनको ये हो गया कि अच्छा यार वो मैंने एक इन्फ्लुएंसर को देखा और उसने घर अपना कितना अच्छा सेट किया हुआ था. उसका घर पहले मेरे जैसा था बट अब उसने इतना अच्छा घर सेट किया, तो आई शुड पुश माई सेल्फ एज वेल. एंड मैंने किसी इन्फ्लुएंसर को देखा और वो घर से बैठी हुई है और वो काम कर रही है, और मैं भी घर पे शादी होने के बाद आई हूँ और मैं फारिग होती हूँ 4-5 घंटा, तो मे बी आई शुड लर्न अ स्किल एंड डू समथिंग एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो देयर इज दैट पॉजिटिव साइड ऑफ सोशल मीडिया जिसमें यही जो पूरी की पूरी चीज़ है वो पॉजिटिवली होती है. बट देन देयर इज़ द ऑल्टरनेट साइड. और ऑल्टरनेट साइड क्या करती है कि वो कहती है कि जी चूँकि आप कॉन्स्टेंटली लोगों को दिखा रहे हैं कि बिगर एंड बेटर एंड बिगर एंड बेटर, तो जिन लोगों को जो लोग अपनी लाइफ स्टाइल नहीं चेंज कर सकते फॉर वट एवर रीज़न, फॉर आउटसाइड वेरिएबल्स, या वो मेंटली नहीं कर पा रहे, स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये वो मज़ीद डिप्रेशन में जा रहे हैं. सो वेयर डू यू, एक तो ये कि हाउ डू यू परसीव दिस कॉन्वर्सेशन एंड वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन कि क्या सही है क्या गलत है? बिकॉज अगेन इसमें कैंप्स बने हुए हैं. इन्फ्लुएंसर साइड ऑफ थिंग्स कहते हैं कि नहीं भाई ठीक है हम कर रहे हैं, हमें पैसा भी बन रहा है और हम कंज्यूमर को भी हेल्प कर रहे हैं वगैरह वगैरह, हम फैशन ब्लॉगर हैं, हम टेक ब्लॉगर हैं, वी टीचिंग ऑल ऑफ दीज पीपल सो मेनी थिंग्स. एंड देन देयर इज़ द ट्विटर साइड ऑफ थिंग्स हु से ये सारे के सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं और ये जो है ना तबाह कर रहे हैं सोसाइटी को. एंड आई थिंक द रियलिटी इज समवेयर इन द मिडल. देयर इज सम सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि इन्फ्लुएंसर साइड पे बननी चाहिए है, एंड देन दे आर ऑल्सो डूइंग समथिंग गुड एज वेल. I wish I knew where the middle path was. I really don't. But so my thoughts on this are ke, you know what you just said ke आप social media पे किसी को देखेंगे living a good life and you'll want to up your standards. तो I think एक फ़र्क ये होगा कि oh why does he have this and why don't I? There's that, and then there's right. Oh wow, if he can have it then maybe I can too. Like for example, Gary Vee. Right. That guy has such a positive and uplifting attitude. Yeah, and energy to him, and his he has so much interaction with his audience, and have you ever seen how he responds to hate? He does it in a beautiful way. Achha. If you ever get a chance to look. So now that guy, he's all about, hey, I did it, you can too. Right. He's very out there about it. He's very out there about his failures and whatnot. But then flip it on the other side. If you see someone jo ki kabhi bhi, they're never vulnerable about what their difficulties are, what their failures are, that's going to be difficult because that's going to create a very unrealistic image. Lekin phir, you don't have to be vulnerable if you don't want to people you don't know. So there's a, वहाँ पे confusion आती है, वहाँ पे dilemma आता है कि अच्छा यार मैं मुज़मिल क्यों vulnerable हूँ इन लोगों की तरफ जिनको मैं जानता ही नहीं हूँ. No one has a right to know you. Yeah. Right?
do you have a responsibility? Sure, you do. You have a responsibility to, be a little ethical when you post certain things and whatnot. But at the same time, no one has a right to see you in that hair that you wake up with. Yeah, like absolutely, right? So the idea of the internet was blogs का जिस तरह होता था. You didn't know who the person was. You just knew कि यार इसके ये ख्याल आते हैं. बट more often than not अब होना ये शुरू हो गया है कि जिस तरह अभी हमारी बिफोर द पॉडकास्ट डिस्कशन हो रही थी ऑफ व्हाट यूड लाइक फॉर योर प्लेटफॉर्म टू बी लाइक, राइट? या कि हम अगर कोई बंदा अच्छी बात कर रहा है ना तो हम कह रहे हैं ये क्यों कर रहा है अच्छी बात, इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस है, ये बड़ा कैसे हुआ है, इसकी करता क्या है, ये सुबह और वो मैंने देखा कि वो परपेचुएट भी हुआ बिकॉज ऑफ दोज आर्टिकल्स जो आपके फेसबुक पे आते रहते हैं कि दीस CEOs wake up at 5 AM and 5 things to do to become successful. Yeah, right? And they're all a bunch of crap, to be honest, because वो उस बंदे का स्टाइल ऑफ अचीविंग सक्सेस है, आपका कुछ और डिफरेंट हो सकता है, बट उसकी वजह से ना व्हाट पीपल डू इज कि दे गो एंड दे एक्सपेक्ट कि अब हर बंदा जो है वो अपनी हर चीज़ बताएगा, और अगर वो नहीं बता रहा तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई गेम है, कोई सीक्रेट है जो मुझे नहीं पता चल रहा. हाँ, कोई सीक्रेट है, वो उसको छुपा रहा है, वो हमें चूना लगा रहा है कि, या वो ये हो रहा है कि जो दिखाया हुआ है उसी में से हर चीज़ ढूंढने की कोशिश करो कि अच्छा इसका मतलब है इसकी तो ज़िंदगी ऐसी है. वो मैंने ना उसके पीछे मतलब यार हमें तो कभी कभार मैं देखता हूँ कि हमारी ना वो पीपल आर वेरी इंटरेस्टिंग, लाइक वो आपकी एक स्टोरी होगी, आपके पीछे बेडशीट कौन सी है, आपके पीछे घर किस तरह सेटअप हुआ है, लोगों ने पूरे माइंड मैप्स बनाए हुए होते हैं. अच्छा, हाँ, oh that's wow, okay. Sometimes you don't even show people a lot of things, and लोगों ने पीछे बैठकर दिखाकर सब बना लिया होता है दिमाग में कि इनका ये सीन है और अब मुझे समझ आ गई, because everybody is trying to sort of psychoanalyze. यार आई थिंक दूसरी चीज़ ये भी है ना कि पिछले 10-15 साल में आई मीन इन्फ्लुएंसर कल्चर आया है. फॉर एग्जांपल you can directly tweet sitting here to the President of the United States of America. When could you ever do that before in your life, So it's I think कि जो अब आप कनेक्ट कर सकते हैं, एक्सेसिबिलिटी जो मिल गई है ना हर एक की तरफ, आई थिंक दैट्स रियली चेंज थिंग्स. एवोल्यूशनरली अगर आप देखें, it's only been 10-15 years since this has been happening. We still have no idea what we're doing. We still have no idea how to manage it, how to contain it, and how it will truly impact us. And we're still understanding how it will impact us. And also just the rate of technological advancement is really fast, and research is just trying to keep up from what I understand. But इसकी चीज़ें मतलब आपको 2020 तक जो टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट था वो तभी समझ में आएगा ठीक तरह जब आप 2040 से देख रहे होगे. हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली. बिकॉज देन वो हाइंडसाइट इज ऑलवेज 2020 वाली बात हो जाती है. तो आई थिंक कि जो पब्लिक एक्सेस है ना पब्लिक फिगर्स की तरफ, that has really changed things, and it's really made things difficult for both the public figure and the person consuming the public figure. Right. Like I was saying earlier, why does anyone, I mean, no one has a right to really demand anything of your personal life from you if you don't want to share them. तो लेकिन अब क्या होता है कि पहले you were only accessible to your close friend circle. Now everyone has this opportunity to tell you what you should be like and what you shouldn't be like. I mean, I face it on my platform too. So I think that's a real problem for people who are on both ends of the spectrum. And इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि I feel like a lot of times influencers, particularly content creators, who are just starting out, वो देखते हैं और वो बड़ा demotivate होते हैं. वो कहते हैं कि यार this is happening, like we probably started at the worst time. It's become so difficult. एक तो cancel culture है. Cancel culture है, you're overly scrutinized. Over-scrutinized हो रहे होते हैं constantly on public platforms. और लोगों को लगता है कि ये एक नया phenomenon है, right? So when I look at the 70s or the 80s of the US, ठीक है, अब social media है तो it's done in a different way, but US के अंदर ना आपके पास TMZs and Paparazzis and all of these people existed. And जैसा कि आपने कहा कि nobody has a right to your life. But the fact is Britney Spears and Lindsay Lohan and Paris Hilton and all of these people, nobody had a right to their lives. They were singers, right? Or actors or whatever. But ये कल्चर आई फील लाइक ये ह्यूमन साइकी के अंदर हमेशा से रहा है कि हम वही डेमीगॉड्स बनाएं और पहले उनको ना डेमीगॉड्स बनाकर उनकी हर चीज़ ढूंढने की कोशिश करें और फिर उनको गिराएं. लाइक ये मैंने लिटरली देखा है कि ये सोशल मीडिया पे आज भी होता है जैसा कि ये पहले वक्तों में होता था. फ़र्क ये था कि उस वक्त उनकी एज ऑफ इन्फॉर्मेशन बहुत क्विकली आ गई हुई थी. हम लोग स्लोली चल रहे थे, तो हमारे थोड़े से सक्सेसफुल लोग होते थे, वो PTV वाले होते थे और बड़ा कंट्रोल्ड मीडिया एनवायरनमेंट होता था.
with social media we're going through the same thing that they went through, and वो magazines आ रहे हैं और cover photo के ऊपर Lindsay Lohan did this and this did that. Mango Baaz आजकल वही कर रहे हैं. True. Oh, you would not believe what Syed Muzamil Hasan did. Yeah. Or what Irfan just said. Why? Because पहले अच्छा होगा क्या कि आपको पहले कोई अच्छा लगेगा, आप उसको चढ़ाओगे. जब वो चढ़ जाएगा ना, अब ये एक बाय डिफॉल्ट है कि अब आपने उसको गिराना है. तो देन यू विल गो अराउंड, यू विल फाइंड फॉल्ट्स इन एवरी पॉसिबल थिंग जो कि आपको वहाँ पर नजर आती है. I mean, forms like Mango Baaz or वैसे भी are based around the majority public opinion, right? Yeah. Because you have to write what sells in that situation. I mean, that's my layman view of it. I could be completely wrong. But that's how I feel when I see a lot of these, and not just Mango Baaz, but other platforms like that too. Those are usually the articles that are popping up. Yeah, because very strangely titled. They're all driven by जो पहले होता था कि what will sell. Yeah, exactly. So, न्यूज़ को ऐसे घुमा दो ताकि क्यों paparazzi लिंडसे लोहान पैरिस हिल्टन को फॉलो करते थे, बिकॉज दे न्यू कि पब्लिक को इतना इनके मिनट टू मिनट को इंटरेस्ट होता है. डियाना के साथ ये हुआ, रॉयल फैमिली तो पूरी की पूरी आज तक उनके साथ ये होता है. तो आई फील लाइक दैट, एंड आई फील लाइक वी डोंट रियली सॉर्ट ऑफ try to understand that enough. As a public figure, what's the psychology? You're not just a public figure anymore. Like, you're not just someone who jo ke na I talk about, मैं एक एनालिस्ट हूँ फॉर एग्जाम्पल, और मैं चीज़ें लिखता हूँ. पुराने वक्तों में मैं लिखता था, अखबार में जाती थी, मेरा नाम लगा होता था, दैट्स इट. बट नाउ आई एम ऑन ट्विटर, एंड इफ आई गो टू अ पार्टी, मेरी तस्वीर आ जाएगी, देखो जरा ये क्या कर रहा है. बिल्कुल. If I am doing this and I'm doing that, and every aspect of your life is now scrutinized. And पहले वो बड़े सुपरस्टार्स का होता था, अब वो ज़्यादा masses में चला गया. So this is an entirely new phenomenon, and it's entirely new territory. Oh yeah, without a doubt. And just to add to what you just said, because I feel like एक point where I'm going to sound like a broken record, because I'm probably going to keep saying this on every podcast. Where are our consumer psychologists? Where are our marketing psychologists? We don't have any, because those fields don't exist here. Yeah. तो हमारे लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है कि expand करें, because on an individual level, what can we do? We can really try and find the person in the public figure. Yeah. Really try and if you don't want to connect with them, at least try and understand that they are as human as you are. They are as privy to faults as you are. आपके उनके बीच एक बहुत बड़ा फ़र्क ये है कि आपकी गलती दुनिया नहीं देख सकती, उनकी देख सकती है. Right. So, and you really can't imagine what that could be like. And that's something that the general public doesn't really understand. And I didn't understand it for the longest time. And but then, of course, as I started reading more, तब मुझे इसका idea होना शुरू हुआ. I didn't understand that for the longest time, and I'm sure you were in the same place when you were younger. Yeah, absolutely. I was very passionate about मेरे Facebook देखना 2013 before 2013, तो मैं हर चीज़ के ऊपर commentary कर रहा था बैठा हुआ. Yeah, Muzamil, I'm sure कि मतलब you started off in 2010 making content, right? So I'm sure when you started off, if you would ever see कि यार इस बंदे के पास 100K Facebook पे हैं, तब तो Facebook ही ज़्यादा था कि 100K Facebook के ऊपर है, you must think of that person like, oh wow, yeah, how did he do that? किस किस्म का बंदा है? Trying to really understand them. And I was reading this book, Staring at the Sun, by this amazing therapist. उसमें उसने एक बड़ी मज़े की बात की. He said that our need to find mentors, he was talking about mentorship, our need to find mentors is representative of our inherent need to find superior beings. And he connected that with the concept of God. Okay, all of us want to believe that there's a God and that has a lot of value. But we also try and find people who are better than us in real life. We idealize people. And when we idealize people, we dehumanize them. That's the problem. Yeah. Idealization leads to dehumanizing others. And that's the problem. You really have to reflect and be honest with yourself. Am I idealizing this person? I mean, Gary Vee के ऊपर अगर हम फिर से जाएं, I know a lot of people who idealize Gary Vee. Oh, that guy's amazing. Yeah. They will literally look at him talking about his failures and they'll be like, oh, wow, this guy's
perfect. Oh no, listen to him. He's being vulnerable. He's talking to you about where he's failed. He's telling you he's not what you think he is. Yeah, and if he's failed before, he can fail again. Yeah. So taking everything as he's saying as if that's gospel is just... That's a problem. It's a poor strategy, right? Yeah, absolutely. So, I think with anyone, if someone's following you, someone else, just trying to understand, yeah, these people are as human as I am, and I don't know what it's like to be in the eye of the public, because truly, nahi samajh sakte log, until they actually start reading about it or they meet people like you. But then how accessible are people like you? Yeah. Or unless you go through something like that yourself. Yeah, exactly. A lot of people are in the eyes of the public, but they never truly understand it unless they, Yeah. जब तक वो उनके ऊपर पड़ती नहीं है. हाँ, absolutely. And that वो चीज़ भी आजकल काफ़ी आसान है ना. मतलब if the public on Instagram, Twitter, whatever, if they go after you, I can't even imagine how stress inducing that is. Yep. But yeah, so I think that wraps up our conversation today. Yeah. इससे conversation निकलती है definitely कि वो कैंसिल कल्चर वाली हमने कॉन्वर्सेशन डिटेल में नहीं की, बिकॉज आई रियली वांट टू गेट अ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट टू इट. वो तो कहना बड़ा आसान है कि इट्स हॉरिबल थिंग, मेरे साथ तो ये तो हॉरिबल है, और दूसरी साइड पे बट अगेन उसके अंदर भी बड़ी वो है कि कैंसिल कल्चर तो चलो कैंसिल कल्चर है, अनोइंग है, बट इंटरनेट आउटरीच जो है उसमें एक तो वो सोशल डिलेमा वाली बात आती है कि आउटरीच को इकोनॉमी का हिस्सा बना दिया, तो नाउ you're gonna be outraged even when you don't want to be. But more importantly, certain things deserve outrage. Like the motorway rape case. Of course, yeah. And then certain things don't. And what's the thought process behind how you can identify कि यार मैं किस तरह किस चीज़ पे outrage करूँ? Because हसन मिनाज ने 2000, अब तो खैर कैंसिल हो गया उसका शो unfortunately, but 2000. Hey, Patriot Act got cancelled? Oh, I don't know. अच्छा. Yeah, because COVID के बाद वो लाइव ऑडियंस चला गया. लाइव ऑडियंस के बगैर उस बंदे की जो वाइब थी ना वो सारी खत्म हो गई, so it got cancelled. बट 2020 की जो लास्ट एपिसोड थी उसमें उसने एक बात बोली, उसने बोला कि लेट्स गो इनटू 2020 एंड लेट्स स्टार्ट, हम अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करना शुरू करें और थोड़ा सा ना गिव योर सेल्फ सम स्पेस, बिकॉज यू कांट बी outraged और पैशनेट अबाउट एवरीथिंग. वो एक फटीग आ जाएगा आप लोगों का कि क्लाइमेट चेंज एंड जेंडर राइट्स एंड दिस एंड दैट एंड व्हाट नॉट, सारा का सारा कंपैशन फटीग. एंड एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा कि यार कुछ लोग हैं जो क्लाइमेट चेंज के बारे में है और वो कर रहे हैं और जिस तरह है, लेकिन जो आजकल हम देखते हैं कि you want influencers to talk about कुछ भी होता है तो कहते हैं why are you talking about this, why aren't you, मुझे तो यानी कि दिन में ना 15 लोग 15 डिफरेंट चीज़ों के बारे में कर रहे होते हैं. if I start talking about everything, I'm gonna become a news channel. Right? So that's true. So again वो एक बड़ी detailed discussion है, because yes you should be vocal about things you're passionate about, but also not go crazy. Or get into a spiral, and I think we're gonna have that in. There's a lot of theories of social psychology on public outrage and cancel culture and whatnot. I think we can discuss that next time then. Yeah. I think just conclusively, I would just like to say that to anyone listening to this, if you're seeing a public figure over here, try and find the human in the person that you look at, because I promise you you're going to find the same flaws that you have. Yep, absolutely. And that's going to help you connect. Yeah. Ali, thank you so much for being part of the show. Thank you. This was Thought Behind Things. My name is Muzamil, and I'll see you in the next one.